हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकेश और आप देख रहे हैं CO2 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स एंड यू मी एंड ट्रेड। इसमें आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि लगातार गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह से uh, तेज़ी आता जा रहा था, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग किया है, फ्यूचर ट्रेडिंग किया है। MCX को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा एक हलचल थी कि चलो हम गोल्ड इस तरह से कर लेंगे, हम गोल्ड में वैसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। और कल गोल्ड और सिल्वर ने इस तरह से मार्केट्स को, अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूँ तो वो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हाई जंप था। नियर अबाउट किसी किसी में अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूँ तो नियर अबाउट 20% का ग्रोथ था। अगर मैं फिर वहाँ से नीचे की बात करूँ, दूसरे सेक्टर्स में बात करूँ, जैसे सिल्वर की बात करूँ, फिर गोल्ड की बात करूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बूमिंग दिखा जा रहा था लास्ट 1 मंथ से, जिसमें कि मोर देन ऐसे सभी लोग इसमें बाइंग आंख बंद कर करते रहे। बहुत सारे लोगों ने पैसा भी कमाया, नो डाउट कमाया। बट एक साथ जिन लोगों के दिमाग में ये भी था कि बहुत ज़्यादा गोल्ड ऊपर और चला जाएगा, और उसके बाद जिन लोगों को फंसाना था गोल्ड और सिल्वर ने, उसने फंसाया और सभी का पैसा नीचे लेके चला गया। और एक ज़बरदस्त झटका, जितना कमाया सब चला गया। तो मैं यही बार बार करता हूँ, बहुत दिनों से कह रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था। और मैं जानता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आंखें बंद करके इस तरीके से यूट्यूब देख के लोगों का जो विभस्त रूप होता है सारे यूट्यूबर्स का, कि भाई पैसा लगाओ पैसा लगाओ, उसका तो कुछ ज़्यादा नहीं है बॉस। आप लोगों का चला गया ना, आप लोगों की जली ना बॉस। आपको कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ बस, क्यों नहीं बोलूँ। मैं पूछ रहा हूँ यार, कब तक पैसा ख़त्म करते रहोगे, कब तक अपने बच्चों की हालत ख़राब कर दोगे, कब तक अपनी फैमिली को उस स्थिति में ला के खड़ा कर दोगे जहाँ से आप उठ नहीं पा रहे हो। कब तक करोगे बॉस। यार कभी तो रुको, अब तो रुक जाओ। इसलिए मैं बार बार करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स को, जिसके पास 1 लाख रुपीज़ है ना बॉस, मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग्स को एक साइड ख़राब ख़त्म करो। ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम को, अगर कोई वीडियो भी देख रहा है ना, उसको एक गाली बक के या मन में ये शांति ले लो कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, उसको साइड करो। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके पैसे एक दिन बनेंगे, दूसरे दिन पूरा का पूरा पैसा वो लेके जाएगा, और वो सूद समेत लेके जाएगा। और आपके साथ हो रहा है, आपके साथ छोड़ो, मेरे साथ भी बहुत पहले बहुत हुआ है, और भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के साथ भी हुआ है, और कल भी ऐसा हुआ है। तो मैं ऐसे लोगों से सब मैं बार बार कहता हूँ कि बॉस ऐसा ना करो, आप बचो। अब रही तो आप ये कहोगे कि सर तो फिर हम करें क्या, फिर पैसे कैसे कमाएं। बॉस पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट, पैसे कमाने के लिए डेली का नहीं है। शेयर मार्केट में जो लोग ये सोच के चला है कि पैसा हमें डेली कमाएंगे, ये प्रोडक्ट डेली कमाने के लिए नहीं है। ये प्रोडक्ट्स प्रोबेबिलिटीज़ के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। सोना है खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे SIP के थ्रू, तो आपके पैसे बहुत बनेंगे। अब कहोगे सर SIP हम कैसे करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आपका आप स्टॉक्स में है, अगर आपका धन में है, अगर आप किसी में जगह पे है, सिल्वर को मैं बोलूँगा, अगर आपके पास बहुत छोटा अमाउंट्स है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट, जैसे देखो टाटा सिल्वर का सभी का मैं कंपेयर इसलिए कराने के लिए जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखोगे टाटा सिल्वर का आज के डेट में सिल्वर का प्राइस क्या है, 30 रुपीज़ 57 पैसा। अगर यहाँ पे देखो, मैंने टाटा सिल्वर्स का रेट क्या है, 37 पैसा, राइट। और यहाँ से जंप किया था 3489, मीन्स 35 पे गया था, और आज घट के सिर्फ 5 रुपीज़ 35-29 के बीच में आ गया, राइट। बट बात छोटा अमाउंट्स का नहीं है, बात ये है कि अगर आप इसमें भी देखोगे सिल्वर्स में टाटा सिल्वर का, तो ये 12% नीचे गया है। इसी तरह से देखोगे टाटा गोल्ड की बात करूँ तो ये भी 9% से नीचे गया है। 9% की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ बॉस। परसेंटेज क्या है, 9.6% से नीचे गया है। STF अगर गोल्ड की दोगे, SET सेट गोल्ड की बात करूँ, ये भी 10% से नीचे गया है।
सेट गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड ETF भी बोलोगे तो नियर अबाउट 9 पॉइंट्स नीचे गया। दैट मीन्स अगर नीचे जाएगा तो सबका नीचे जाएगा उतना ही परसेंटेज, अगर चाहे वो गोल्ड का प्राइस बहुत छोटा क्यों नहीं। इसलिए टाटा गोल्ड की प्राइस अभी 15 रुपीज़ 77 पैसा है। अगर आपके पास 100 रुपया डेली है, आप 100 रुपया डेली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप 100 रुपया नहीं, 100 रुपया चलो 15 रुपया देते इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो ना, 15 से 20 रुपया कर सकते हो ना बॉस। इसको एज ए ETF की तरह बाई करो, ऐसे जगह पे बाई करना। मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, ऐसे जगह पे बाई करना, ऐसे नहीं कि अप स्टॉक में बाई कर लेना, धन में बाई करने की कोशिश करना मत करना। ना अप स्टॉक में बाई करना ना धन में बाई करना। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाई मत करना। जब भी बाई आप एक शेयर करने जाओगे ना, तो आपका 26 रुपीज़ तो ले ही लेगा वो। तो हर बार वो 20 जितने का तो वो रसगुल्ला नहीं है, उससे ज़्यादा का तो मिठाई उसका रस हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि ऐसे जगह पे जाके बाई करो जहाँ पे कि डिलीवर पे 1 रुपया नहीं लेता है। ऐसे ब्रोकरेज को ढूंढो जो डिलीवर्स पे 1 रुपया नहीं लेता है। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी, मैं हम नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे। जब आप रिक्वेस्ट करोगे तभी मैं बताऊंगा कि कौन से ब्रोकरेज पे आपको जाना है। ऐसे नहीं कि बाद में ये कहोगे कि भाई ब्रोकरेज के लिए इसने अपना काम निकाल लिया है, मत करो बस। मैं कह रहा हूँ जब आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे कि सर कौन से ब्रोकरेज पे हमें काम करना है, तो देन आई विल give you names. That name you have to be follow. This is a very simple as that. So thing is, what kind of the brokerage I am going to be use it. So we have a 3 and 4 names. I will give you once you send me request, then I will give you. Another thing is, अब यहाँ पे काम कैसे करना है इज़ वेरी सिंपल राइट। तो आपको काम करना है सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली की मीन्स सपोज आपको टाटा सिल्वर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसी तरह से टाटा गोल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर कोई और भी ETFs में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट यू हैव अ वेरी स्मॉल चंक अमाउंट्स मीन्स दैट मीन्स सेइंग इज यू हैव अ 5,000 रुपीज़ एंड 10,000 रुपीज़। आई एम टॉकिंग ऑन दिस। Suppose you have a 1 lakh or 2 lakh rupees, you don't have a fund importance in your pockets. That means you can invest in more. But the thing is, you have a very simple amounts, small amounts, chunk amounts. Then you have opportunities to do every single day as per the SIP's levels. Directly you have to link with your bank, and then you have to be do the correctly. So automatically is going to be reduce your amount from your bank to the this SIP, and going to be do daily basis. So you can invest daily. Number one. Number two, if you want to invest by the manually, then you have to every day you have to transfer into your account into this, and then you have to be buy one by one. So it's a very simple and strategy you have to do this. So again I'm going to say you is this is the silvers and this is the gold. The gold and silvers, yes, investment has to be there, no, for the 4 month, 2 month, or 1 month, or 1 day. This is for the more than 15 years, not less than. If you have no patience, then you have to be invested and until more than 10 years, not less than. If you want to invest maybe 5 years, then you can. Otherwise you have to go in there more than 10 years. So this is the best thing you have to do this. This is number one. Number two, another thing is there is another way you have to do. Yes, we have another way. If you want to now, this has to be go in the downs. Deep down you have to buy. Deep downs means, now say I'm going to here's, let's examples. I'm going to here's. Now here is there is a now today, last day in a Friday, there is a data means near about 12% has to be go down, and from the 12% to the next maybe in a more next day has to be go down again. Then you have to wait and watch, and I'm going to give you one data, one lines. This is the lines is 24. Again is the SEBI rules has to become here. SEBI is saying is you cannot give the your labels. So I'm not going to give you in some labels. I'm saying yes, you have to be do the patiently, and has to become the uh, your price has to become in these layers. Then this is the right times to invest. So you have to wait and watch and wait on another thing is to hears. But if your amount is very chunk amounts, maybe 25 rupees or 30 rupees, so no need to worry about that. The investments plans or times you can do the investments from the today onwards, maybe tomorrow onwards. So it is a very simple.
So because your time period is more than 10 years and continuously you're going to be invested. So it's a very simple thing is there, right? There is a no in a hard and fast, any calculation has to be there and math is there, and you going to be do that. So be remembers and keep in mind, this is not the process where we have to be every day you're going to be generate the money and you have to be run your home or whatever's need in your home. The investment amounts has to be there, that is a free from your money, which is not required for any certain period of time, one day or 2 days, something like that. That money has to be free for your accounts and free for your need, then you have to invest that amounts. So definitely is going to be work for you, and not for the 1 years, not for the 2 years, not for the 3 months, not for the one day, has to be there in the 5 10 years. Then you can think about that, that the more and is very big amount or handsome amount has to be collect, and then you can enjoy that amount. Another things, so understand what I'm trying to say you. And this thing is another is let's example SBI's chart also is here. This SBI chart also is here is right. Here is also is, if you check from here to the years, another is 12%, right, is fall down. So it could be possible from here to is come down is maybe here to here. So it's very simple. Again, I'm going to say you is in the gold, don't do any kinds of the options tradings. It's option tradings is not for you guys. It's very risky. Every times you think about that, I mean it's a very in a comfortable zones, but the against once you do the options tradings in another day, and now it's a come in the danger zone. So comfortable zone to the danger zone is very simple, and frequently peoples are going to be move from comfortable zone to danger zones, again danger zone to comfortable zones. This is bread and butters is not situation, I would say. This is the very hard situations for your life. You're going to be lose your money from completely you know you will think about that, I lose everything. So stop trading on option trading, I would say. Just think about that and do the investments as per the SIP levels, or maybe daily basis, or for the long terms. Stop trading option tradings, stop, please. Be safe, be safe. And again I'm saying is keep in mind, safe for your future, safe for your family. So I'm not today what in this videos I'm not breach any kind of the SEBI rules and regulations. Whatever SEBI rule is saying is a label layer, I'm not going to do any kinds of the label. I'm giving you and what you have to do. I'm saying every day you have to be invest. Every day investment is, there is a no charts is required for theirs. Chart is coming when you do trading every day. I'm saying is no. I'm saying you have to do investments do every day in, especially in uh, silver and gold, because n number of friend is there. My friend is sitting in Singapore, my friend is sitting in US, my friend is sitting in Australia, my friend is sitting in Indonesia, and my friend is sitting in Switzerland. They all are losing money. And today there is a very big situation is going to be happen, even though is a Indian market, even though in the international markets like a crypto market as well. Crypto markets also today and day before yesterday, it was crashed, you know and very bad situations going to become in the future, I would say. Not year one year and 2 years, I'm coming days means another 5 and 10 days, what is going to be happen, nobody knows. There's a very difficult situations coming for the for everyone. So what we have to do is we have to do we have to be do in the manage everything in very calmly. So keep it in mind, think about that in this way, and be careful. Okay, thank you for watching this video, and thanks a lot.